Now, Rohit, first, have you made the resume? The resume, previous resume is correct, sir. Why it is going to, sir? अरे यार वो मांग रहा है यार, अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें करना है तो बोलो. You have to make it in this format. Rohit, are you really interested? Otherwise, I can more or less. I mean, are you? Do you? Okay, let me ask you straight. तुम भर के दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम बोलो पैसा बाजार, यही तो नहीं फायदा तो है सर, इसका. ये तो सर उसमें भी ऐड हो जाएगा ना सर, पिछले वाले में, तो मैं इसमें तुम भी यार ऐड इस करके वाले बता में प्लीज करके दे दो रोहित मेरे को. तुम्हें करना है तो तुम बोलो फटाफट. हाँ सर, कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है जितने ना? ये कॉलम बेटा आएंगे तुम्हें काम क्या? खत्म करना ही नहीं बेटा. ये तुम्हें एक्चुअली कर लेना चाहिए था ना, मुझे सबमिट करना ही है अगर तुम इंटरेस्टेड हो. अब दूसरे पे आ जाए तो तुमने बनाया है. ये है ना तुम्हारा. एक मिनट. अब रोहित तुम्हें दूसरा काम जो करना होगा वो डॉक्यूमेंटेशन का करना होगा. बहुत ध्यान से सुनो जो मैं कह. डॉक्यूमेंटेशन में एक तो तुमने जो भी ग्राफ्स बनाए, सो वट एवर तुमने जो भी ग्राफ्स बनाया उनको डॉक्यूमेंट करना होगा. जैसे कि मैं पहला ग्राफ तुम्हारा बना के दिखा देता हूं. हाँ? तुमने बनाया हीट मैप. सो तुमने क्या कहा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट हम देंगे इस पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है? यस सर। एक सेकंड बेटा. What is the purpose of this graph? So this graph gives the gradation of the measure, which is say sales by time and party ledger name. ऐसा था ना? यस सर। ठीक है ना? So description is the heat map has been developed from the matrix report. अरे वाह. गेज डोनट चार्ट. अबे हीट मैप पे आए ना इसको, क्योंकि एक एक चीज रोहित तुम डिस्क्राइब कर लो इसमें. फ्रॉम द मैट्रिक्स रिपोर्ट the columns had fiscal year and fiscal month. Rows had item name and the measure was sales value.
ठीक है ना। alerter was made by the background color, ऐसे हुआ ना, ये था ना विजुअल हेल्प, ये बना कैसे। फील्ड फॉर्मेटिंग वाज डन ऑन सेल्स वैल्यू, इस तरीके से हुआ। alerter, the field formatting was done on sales value, ठीक है, as shown below। तो ये तुम अगर ये पूरा का पूरा ब्लॉक कर लोगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है ना एडवांस कंट्रोल्स, और ये हो जाएगा बैकग्राउंड कलर लाइक दिस, सो इट्स ग्रेडेड एंड द ग्रेडेशन वाज कोडेड एज फॉलोइंग। ठीक है, ये सुनो, ओके सर। ये समझ में आया कि नहीं आया। रोहित समझ में आया कि नहीं आया। यस सर, यस सर। क्योंकि ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके हम ब्लॉग में डाल देंगे। ठीक है, यस सर। then what does the graph indicate? It indicates how the measure is changing by time and item name। ठीक है, ये एक हो गया। अब मैं दूसरा वाला कर देता हूं, आई शो यू द सेकेंड वन। So this is heat map। Then line chart। So line chart के केस में क्या किया तुमने, based on the stock group, मतलब line chart helps indicate measures sliced by multiple types of dimension parameters। So ये लाइन चार्ट था।
इज इट क्लियर? तो ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट जो है हम हर जगह भेजेंगे, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा डिप्लॉयमेंट पैकेज में जाएगा रोहित, ये बहुत क्रिटिकल है। मतलब मैं जितने भी डिप्लॉयमेंट कर रहा हूँ उसमें मैं तुम्हारा ये प्रोडक्ट डालूंगा। यस सर। सो द ग्राफ enabled drill down by date dimension as shown below, ठीक है? यस सर। ये किया, ये किया, ये किया, right? Then legend, stock group and the date, and here it is the legend, stock group and the date, right? This is simple, right? Then the third we come down to is the waterfall chart. तुमने सेल्स वैल्यू क्यों ले? Why have you taken the sales value? Why not take the closing stock value? Because that will make more sense. It's a snapshot. Okay, fine. So the waterfall chart. This enables us to capture the percentage change over the time periods for snapshots and cumulative measures. Is it clear? So this chart can be used for analysis for, say, closing stock value, which is a snapshot, or sales, which is a cumulative measure. Is it clear? रोहित क्लियर है कि नहीं है बेटा? So here the category is fiscal year. The breakdown is by the stock group and the value is this. So your x-axis is 2018 and this category breakdown is here, right? Now your sales value is this attribute. Now what is this showing? How much it is decreased? For which stock group? TV model 1.
All are increasing, but TV model one is decreased Why? over the 2018 to 2019 period. Okay, fine. So it's basically saying 2018 to 2019, you're looking at a decrease in the TV mod. So therefore it's red. And Yes, sir. here it is increasing. Okay, Yes, sir. fine. Right? So I get it. So this graph will show the percentage increase in the sales value over the period, over the prior period. Right? Yes, sir. Correct? Through this. परसेंटेज चेंज नहीं है सर, एक्चुअल चेंज है सर इसमें. Percentage भी तो आ रहा है ना. You are actually also getting percentage. Rohit, you are also getting No, percentage here, na? no sir, it is actual change sir. See this? This is 100 million sir, not percentage, it is value. No, it's a percentage. This is the absolute value for 2019. Yes sir. But here also showing the percentage, na? What you are saying is that this is not showing the absolute this thing. So this is showing absolute value that 4 million sale value is increased, 1 million minus 29 million sale is decreased by value sir, not No, I'm not. percentage. This is 20. So this is 2018. This is 20. Okay, this is 2020. Okay, 2020, there is no this thing. So what happens here? Okay, let's just do it this way. This. Okay. And this is by category breakdown in the sales value. Correct. Now the tricky one now is going to be तुमने अच्छा काम किया यार. ये 100 ये बेटा पूरा हो गया ना. Yes sir. Gauge area change. Just one second. अभी ट्रिकी वाला थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा सा. The scatter plot. Right? Yes. The scatter plot helps give analysis of multiple measures, right, by Yes, sir. 2 dimensions, right? ये हुआ. Here Yes, sir. the x axis was purchase value, y axis was sales value, and the size of the bubble is the closing stock value. यही तो था ना. Yes sir.
Now we have looked across multiple companies. We have looked upon the data for multiple companies, right? Sample 2, sample 3, right? Across various items. Which is the details. Is it correct? Okay. Yes or no? Yes, sir. So this is how it is. Now, how to read the graph? If the closing stock value is high, sales is low, and purchase value is high, then the item is overstocked. करेक्ट? ये हो जाएगा ना? सही है बेटा कि नहीं है? इज इट करेक्ट? यस और नो? हाँ, ठीक है बेटा? This is it. So what I will do here is then I'm closing this, and this is I'm saying it as a description. So Rohit, what I will do is description of graph. So you have to now describe all the graphs for me. Is it clear? Now Yes, sir. this one, what I'm going to do is I'm assuming it is correct. I'm publishing it here. तो बेटा ये देखो ना, एक तो डेवलपिंग द रिज्यूमे, ये एक होगा, एक डेवलपिंग द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना? इससे बेटा ज्यादा मैं तुम्हें आज नहीं खींच पाऊंगा बिकॉज तुम इससे ज्यादा वो कर नहीं पाओगे। और फिर प्रैक्टिसिंग टीसीपी लोड, यही तो एक इशू है ना। ये 3 हो जाएंगे तुम्हारा काम हो जाएगा। Yes, sir. करेक्ट? Because once you prepare the documentation, I'll make it into a blog and then post it. Then once if the things are done, then interviewing people. I'll give you the interviews and I'll give you the queries and you just interview those guys. You do 2 or 3 interviews a week so that you can check out कि भाई क्या status है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Correct? Anything else? Okay, sir. ये टेंटेटिव नहीं, ये पहले 3 तो काम खत्म करो। तुमने खत्म करना था यार, रिज्यूमे तो बनाना था यार रोहित, यार कमाल कर रहे हो।
यार मैं सैटरडे को भी काम कर रहा हूँ रोहित, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। See, this is coming out to be, but for weighted average calculation, I need the entire total thing to be inward. तो समझ में आया कि नहीं आया? ये तो तुमने टाइम ग्रेनुलरिटी का ईयर मंथ का कर दिया। नहीं आया तुम्हें समझ में? ये गलत हो गया ना। ये गलत हो गया बेटा, क्योंकि क्रेडिट अमाउंट नहीं आएगा ना, ये हट जाएगा। क्योंकि इसमें ना दिस विल गिव यू टोटल क्रेडिट अमाउंट, मतलब सेल्स सेल्स अमाउंट भी तो आ जाएगा ना इसमें, नहीं इसमें आ जाएगा, बट व्हेन ये गलत हो गया ना था इसमें, ये गलत हो। तो समझ आया ना, हमें केवल इनवर्ड लेंगे ना। और इधर जो क्लोजिंग बैलेंस क्वांटिटी है, इसकी एक कॉपी बनानी पड़ेगी, because that will be the total debit quantity, because otherwise how do you calculate the weighted average na? So now if I say closing balance quantity for inventory calculation, and when you go down, it goes it here, it goes here. So now what happens is, this is the closing balance quantity for inventory valuation. अब वेटेड एवरेज रेट निकलेगा ना इससे, तो समझ आया कि नहीं आया? अब वेटेड एवरेज रेट इससे निकलेगा ना, ये आ गया तुम्हारा। तो बहुत ध्यान से देखो इसको,
Because in the weighted average calculation, I need to have only the debit entries, not the credit entries. Okay, sir. समझ आया? Yes, sir. तो सर फॉर्मूला डिफाइंड है ना, सो वेटेड एवरेज के लिए कि मुझे डेबिट एंट्री हाँ नहीं, थोड़ा सा हमें चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देना। सेम विद द ईयर टू मंथ, तुमने सारा कर दिया, ये एक्चुअली डन अ फैंटास्टिक जॉब। ईयर टू मंथ, ईयर सबके हिसाब से इसी में ही आ जाएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेटा शायद दे माइट बी गिविंग यू द ऑर्डर, अनुभव टीम माइट बी गिविंग द ऑर्डर दिस वीक, so this you can turn it around in within 1 hour or 2 hours. Okay.